areas, two major focus areas. That is one, to promote data collection and research activities related to the Project India 2047 focus area. And the second one is to promote the formation of local chapters of Empower India Foundation to take the mission of empowerment to the grassroots. एम्पावर इंडिया फाउंडेशन की जानिब से इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में नेशनल कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। अपने दूसरे नेशनल कॉन्क्लेव में एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने अपना प्रोजेक्ट इंडिया 2047 सप्लीमेंट्री एडिशन 2021 जारी किया। नेशनल कॉन्क्लेव 2 रोज़ा प्रोग्राम था, जिसमें पहले दिन नेशनल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ शोबों के डेलीगेट्स ने भी शिरकत की, जिनमें प्रोफेसर अमिताभ कुंडू पोस्ट सचर कमेटी चेयरमैन ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी। साथ ही रहमान खान साबिक राज्यसभा मेंबर और राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरपर्सन गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। Regional inequality and social inequality. Unless we address this, I don't think we are going to reach the $5 trillion vision which has been mentioned by the government, and I really welcome that announcement. But whatever required to do in terms of structural transformation, empowerment of the marginalized and vulnerable needs to be addressed immediately. The fighting streak and they lose, not in a very way. So how do we get? For example, I come to this before closing food. One of the major things we were talking about is data. Now the whole world is talking about it. Data is, we have not understood, without data you can't proceed. Progress is not possible. A simple thing, why reservation was not given to Muslims? Contentious issue reservation. Whether reservation